Clap now. कब तक बर्बाद होते रहोगे? जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा। गाइस यूट्यूब हेल्पर नाम का एक चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। ये थोड़ा बंदा बार बार स्पैम कर रहा है अपना, तो एक बार चैनल पे जाओ, उसके देखो क्या है वो। विराट सर, और कोई प्लेयर नहीं मिला? मुझे सिर्फ आपका ही विकेट चाहिए। चल बॉलिंग कर। जब स्टेमिना बड़ा होगा कोई चैलेंज बड़ा नहीं होगा। बूस्ट जो कि 3 गुना ज्यादा स्टेमिना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। The batsman's looking confident here. Oh, that's clearly swung the match. Great discounts on match days. Swiggy Match Day Mania. आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मी है। CSK स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म। 71 पे 3 पीछे इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स। 105 पे 2 स्कोर था दिल्ली कैपिटल्स का। खत्म की पारी 175 पे 3। शायद उम्मीदें थी कुछ और रन बनाए, लेकिन जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है गेंदबाजी के साथ, आज रोर किया है दिल्ली ने। 6 विकेट श्रेयस अय्यर के पास बहुत बेहतरीन तरीके से घुमाया है। और अब 14वें ओवर की शुरुआत, जहां ओस भी आती दिख रही है, लेकिन 13 ओवर्स में दोनों स्पिनर्स के जो 8 ओवर हैं वो खत्म कर चुके हैं। अच्छा शॉट, अच्छी प्लेसमेंट, पहली गेंद पे चौका। यहां बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट। कोई भी बल्लेबाज इस तरीके का गैप जब ढूंढता है तो बहुत खुश होता है। गेंद में कोई खराबी नहीं और बहुत बढ़िया तरीके से खेला। टॉप क्लास शॉट। ये आसान नहीं होता शॉट। ये रिस्ट में बहुत ताकत है। बेहतरीन टाइमिंग और खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। डोले देखिए, खान साहब जैसे हैं बिल्कुल। बिल्कुल, पर उनकी रिस्ट पोजीशन बहुत बेहतरीन होती है। देखिए आज तजुर्बा और युवा और गुरु और शिष्य सब मैदान पे देखने को मिले। ऋषभ पंत आए, मिले MS धोनी से, वो जरा मसल्स चेक किए, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो कुछ समय पहले बात की, उम्र के आंकड़ों पे मत जाएं। MS धोनी, विंटेज धोनी, उसके बाद ऋषभ पंत। आज अब गुरु का दिन इतना अच्छा तो फिर शिष्य इंप्रेस कैसे ना करे। डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद एकदम सटीक थ्रो होता है। हवा में गेंद, यहां पर बॉल बच गए। 4 रन के लिए। बिल्कुल ऋषभ पंत बहुत ही एक्टिव है और काफी कुछ बॉलर्स को बोल रहे हैं, फील्डर्स को बोल रहे हैं जो धोनी करते हैं। बिल्कुल एक बड़ा एग्जांपल है। जैसे धोनी ने कैच पकड़ा और ये बेहतरीन शॉट। यहां पर चांसेस लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा उंगली को टच होके गया, बट इंपॉर्टेंट रन चेन्नई के लिए। जो करना चाहते थे केदार जाधव, वही किया और अच्छा परिणाम उन्हें मिला। मिड ऑफ को भेजना चाहते थे। आसपास का मुकाबला जरूर था, पर जीते केदार जाधव। देखना ये होगा एक बार फिर जीते हैं कि नहीं। यह मिड ऑफ आगे ही था और रन मिलेंगे 2। और कीपर का रोल मेरा मानना है किरण भाई बहुत बड़ा हो जाता है इस फॉर्मेट में भी। जब आप देखते हैं MS धोनी से किस तरीके से रहते हैं ऑफ द फील्ड, क्या क्या उन्होंने किया वो तो सीखते ही हैं, और क्या गुफ्तगू करते हैं गेंदबाजों से, कैसे फील्ड लगाते हैं। जितना जल्दी सीखे कोई भी कीपर वो बेहतर। बिल्कुल, आप हर फॉर्मेट में, टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट, T20 में विकेट कीपर द हार्ट ऑफ द गेम। वो जो समझता है वो कोई नहीं समझता, क्योंकि पिच, बॉलर क्या कर रहा है, बल्लेबाज क्या कर रहा है, फील्डर क्या खड़ा है।
पर आज तक हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, किसी को नहीं पता लगा कि आपने जावेद मिर्जा साहब को क्या बोला था। वो जरूर बता दें यहाँ की, क्योंकि देखिए बहुत हमने गुफ्तगू देखी पर वो कुछ अलग थी। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड, चेन्नई सुपर किंग्स 22 अंकों के साथ ऊपर, लेकिन इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स कहीं आगे। फेयरनेस नहीं किरण भाई, आज ऑनेस्टी बता दें, सब वेट कर रहे हैं। देखो जावेद के साथ मैच खेलने बहुत मजा आता है, और हर टेस्ट मैच, वनडे पर नो, जो मैच हुई थी पहली बार वर्ल्ड कप में, वहां पे टेंस वाली मैच थी, मौका था यहाँ पर। और बिल्कुल जावेद भाई बड़े प्लेयर, और जो इंसिडेंट हुआ था ना, कॉडबेन की अपील हुई थी डाउन द लेग साइड, तो जावेद टिपिकल, अरे तू किलन क्या को अपील करते लेता है ना। तो मैंने बोला जावेद भाई आप आपका काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। फिर उसमें तो लैंग्वेज बहुत कॉमन है, हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, गुजराती बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, तो जरा जो लैंग्वेज हमने एक्सचेंज की थोड़ी अलग सी थी। प्यार के 2 शब्द बोले थे उनको, उन्होंने तो बात बॉडी लैंग्वेज पे ले आई थी। स्कूप मारना कहीं चाहते थे, गई कहीं है, लेकिन ऊंची गई है और फील्डर्स के बीच में गई है। पारी बरकरार है फैफ डू प्लेसी की। इस ओवर में थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है, या यहां से कहानी बदल सकती है। 13 इस ओवर से 84 पे 3। सुशांत तेंदुलकर, प्रदाश पाटिल, साहू, सिद्धेश, यानी भोगचंद, सुप्रिया पाल, सबको बिग शॉट आउट। और देखिए मैदान में तलवार तो है, लेकिन अभी बाहर आई नहीं है। 10वें ओवर में जब विकेट गिरी थी तब आए थे केदार जाधव। 6 ओवर का खेल बचा है, फील्डर अंदर, स्पॉट पिक करते हुए फैफ डू प्लेसी। अल्ट्रो सुपर स्ट्राइकर पहले ही मैच से फॉर्म में दिखे, अच्छे टच में दिखे डू प्लेसी। एक बार सेट हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हैं, और रबाडा को जानते हैं क्या गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि उनके कप्तान भी है और काफी क्रिकेट खेले दोनों साथ में मिलकर। बेहतरीन टाइम यहां पर सीएसके को 20, 22, 25 रन की ओवर की जरूरत है। क्या मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर ऊपर छोटा गेंद अच्छा खेलते हैं। बाउंसर जब भी कोई डालने का प्रयास करता है, अच्छा फुल स्ट्रोक लगाते हैं। और ये मुंबई इंडियन के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मुकाबला था, नाबाद बनाए थे 58, कमाल के कुछ स्ट्रोक, बढ़िया खिलाड़ी, और काफी निवेश किया है चेन्नई सुपर किंग ने फैफ डू प्लेसी में, अहम हिस्सा बनाया है अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, और वो बहुत जरूरी किसी भी खिलाड़ी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े पावर हिटर है या स्पिन, अगर गेंद घूम भी रहा हो फिर भी कदमों का इस्तेमाल करते हैं और सबको परेशान करते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको और अच्छा इस्तेमाल किया और अच्छा खिलाड़ी बनाया आईपीएल में। बिल्कुल, एक तो विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है, और ऐसा एक गेम मेकर होता है, ये गेम मेकर है, हमेशा गेम को लेके चलते रहते हैं आखिर तक। बेहतरीन टच यहां पर, ये केदार जाधव है, ये बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, लेट खेला उन्होंने काफी, क्या इंपॉर्टेंट रन थे ये सीएसके के लिए।
दूसरा चौका इस ओवर का। कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल, काफी लेट खेलते हैं, थर्ड मैन पॉइंट की दिशा में कट मारने में माहिर, काफी अनुभवी खिलाड़ी। अगर गेंदबाज रबाडा के नजरिए से देखें, उनके पास गति है, पेस है, थोड़ा सा इनको आगे गेंद डालने का प्रयास करें, क्योंकि ये छोटे कद काठी के बिल्कुल पीछे घुस जाते हैं। पुल उतना अच्छा नहीं मारते पर कट बहुत बढ़िया मारते हैं। वो हल्के से टचेस केदार जाधव के, वैसे धाकड़ नहीं कि आगे पावर गेम का इस्तेमाल करते हैं, वो गेंदबाज की पावर को अपने पक्ष में यूज करते हैं। लेकिन अब दोनों से सवाल यही, उसकी चर्चा पिछले मैच में भी काफी हुई थी, जब तक MS धोनी आए तो आप सिर्फ कैचअप क्रिकेट खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। क्या आज की भी कहानी वही है? केदार जाधव के पहले ऋतुराज गायकवाड़ आए थे, अब 15वां ओवर है और MS धोनी अभी बीच में आए भी नहीं। देखिए जिस तरीके से आज खेल चला है, नंबर 4 पर मैं जरूर केदार जाधव को भेजता ऋतुराज गायकवाड़ से पहले, और या फिर सैम करन, क्योंकि आपके पास अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, 2 फिरकी गेंदबाज। उस समय ऋतुराज गायकवाड़ नए खिलाड़ी का आना मेरा मानना शायद नहीं बनता था, पर चलिए अब तो वो बात तो गई। पर अब जब भी विकेट गिरेगी MS धोनी को मैं देखना चाहूंगा। अब आप रविंद्र जडेजा, सैम करन को नहीं भेज सकते, क्योंकि अब कोई फिरकी गेंदबाज नहीं है। अब सारे तेज गेंदबाज जो हैं उनके ओवर हैं बचे, और आपको लगाने हैं बड़े बड़े स्ट्रोक। तो अभी तक केवल जाधव या सैम करन ऋतुराज गायकवाड़ से पहले, पर अभी महेंद्र सिंह धोनी का नंबर बनता है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। ओवर की समाप्ति 95 पे 3। तुम एक अकेली जान अपने एजेंट्स को बचाओगे या अपनी आवाम को? Crackdown, streaming now on Voot Select. कब तक बर्बाद होते रहोगे? जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 साल में 9 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट है। हम डरते हैं, इसीलिए दबा के रखते हैं वो। क्या कुछ बड़ा है जी? कर एक ही लड़की की बार बार शादी करवाते हैं। सारी सुइयां आश्रम की तरफ ही। आज ओपनिंग थोड़ी अच्छी नहीं रही यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि ओपनिंग में थोड़ा यहाँ पे गड़मड़ घटोड़ा हो गया था यहाँ पर, क्योंकि जाकी मुरली विजय और जो उनके साथ ओपनिंग शेन वॉटसन आए थे, अभी तक 3 मैच हुए हैं, तीनों में ही ये दोनों ही असफल रहे हैं अभी तक। अगर हम फैफ डुप्लेसिस की बात करें तो 38 गेंदों पे 38 रन मार चुके हैं 30 गेंदों का सामना करके, और केदार जाधव खेल रहे हैं 25 रनों पे 19 बॉलों का सामना करके। और गाइस क्रिकेट चैटर्स को लाइव और सब्सक्राइब करो अगर अभी भी आपने नहीं करा है तो। सोलवा आंड्रिक नॉक किया, थोड़ी सी ऊपर गिरी। मार्कस टॉयनिस मिड विकेट पे रन लेना चाहते थे, केदार जाधव ने वापस भेजा, लेकिन रन लेना पड़ेगा इस बार, चाहे ओवरथ्रो के जरिए ही। चेक शायद करना चाहेंगे, ऐसा लगा कि फैफ डुप्लेसिस वापस पहुंच गए थे कंफर्टेबली। अच्छी डायरेक्ट हिट, लेकिन अब स्ट्राइक पे केदार जाधव। रेफरल फॉर रन आउट, सो बी अ बेस्ट साइड एंगल प्लीज। grounded in. Yeah, little back, just rock and roll please. Yeah, grounded. I'm ready with my decision. ये सुना आपने थर्ड अंपायर से, बैट तो ग्राउंडेड था लेकिन शॉट्स अब थोड़ी एरियल खेलनी पड़ेंगी। 16.5 रिक्वायर्ड रन रेट। किरण भाई पिछले ओवर में आशीष ने कहा कि अब MS का आना है, वो तो खैर तय ही है, लेकिन क्या ऊपर आ सकते थे? पिछले 2 सीजन बहुत बेहतर निकले और अपने आप को समय दिया था खुद धोनी ने कुछ गेंदें देखने का। अब जब आना पड़ेगा तो पहली गेंद से ही बड़े शॉट्स लगाने। आपकी क्या राय? ये देखो काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं, वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट खेले ही नहीं,
और मैं चाहता था उनको पहले ही मैच से थोड़े आगे आगे बल्लेबाजी करना. He's not going to be easy either. It's not just a Rabada story. He was a great strength to South Africa through the last South African summer. And it's something du Plessis will know too. He captained him throughout that summer. We'll talk about the wickets this evening, and we'll talk about earlier Michael Slater and I did the pitch report, and we talked about short balls, the job that short balls were doing here in Dubai, in the Dubai International Stadium. And there's another one. Norkia got another one. That adds up now to 10 dismissals on the short ball. Stone dead LBW, no question. The minute he swung and missed, you kind of knew what the rest of the story was about. Well, immediate question on the minds of millions of people. Alright, Kedar Jadhav is out. He's not reviewing it. Is it going to be Mahendra Singh Dhoni? Looking for the boundary because Nokia started the over really well. Just the 3 runs of the first 3 balls. Kedar Jadhav had to do something expansive. Very, very talented cricketer. Knew the importance of this over. Kedar Jadhav gone. It's 98 for 4. हेड और टेल ही देखते रहोगे कि अपनी टीम भी बनाओ. माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ. खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस. डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ. Very lively ball. Surprised it's not called a wide. It's called as one for the over. Well bowled. Knew the importance at the beginning of the over. First 3 balls, 3 singles. Forced Kedar Jadhav into a situation where he had to take a big risk. And the risk not coming off. Excellent stuff from Nokia. He's a good signing, this guy. And Dhoni was away. Quite with the boundary. Shimmering up does well. Pace to the ball. And then just watches it. That's very important. As you're tumbling on a boundary's edge, you've got to keep your eye on the ball. Right, 16 are gone now. 101 for 4. Champions across all race conditions. The TVS Apache RTR series with race-tuned fuel injection. Performance evolution. RTR Revolution. Racing DNA unleashed. .75 required, only 24 balls remaining. Like Nicholas was saying, there is a mountain to climb. There certainly is. But we have got MS Dhoni out there. If there is a chance of
sort of miraculous finish. It might be MS Dhoni who's able to achieve it. It's not going to be easy because you've got 2 overs of Rabada, who bowls superbly in the death and in the super overs. 1 over from Nokia, 1 over from Avesh. So 3 quicks to bowl the last 4 overs. Yeah, Navesh has been the most expensive. He's gone for just over 10 runs and over. So this is going to be the key over. This is going to be the key over for CSK. Final 4. Down the ground, that's what he does. He's got the fastest hands in the business. And we saw it when he closed it out in Sharjah. Yes, it was a losing cause of the great MS Dhoni. Are we going to see something extra special over the next 15 or 20 minutes? Look at that high back lift. Look at the speed of the bat as it comes down. Bang. 2 bounces and into the fence. Those fast hands, Sonny. Did you see him just dip slightly to make sure he got that out of the middle? Shortens him up. Gets away with it. Good delivery. Good comeback. But you're right, Sonny, this has got to be the over. Navesh has been the most expensive, and we've seen some fast bowling go the journey. We saw spin bowling in the first innings go the journey as well. With the spinners for Delhi have bowled beautifully. Oh yes, Akshar Patel, 1 for only 18, and Mishra, only 23 runs off his 4 overs. His 8 overs, absolutely top class. And as Siva was explaining to us, it's the speed at which these spinners bowl. Akshar bowled a little over 90, but he generally bowls 98, so it slowed it down. And Mishra was bowling in the 70s. Terrific stuff from those 2 spinners. Delhi have done a wonderful job of controlling the match pretty well from the start with the batting. We saw to the man, no run. Hits it too hard to him. This is also quite interesting. Navesh going around the wicket. It's something that he would had to have practiced. This is a game plan to MS Dhoni. So it's something that him and Shreyas Iyer and Ricky Ponting think will work against MS Dhoni. Everybody is up on the offside. Backward point is up. Cover, extra cover. You've got Kahisa, Rabada at mid-off. You've got a 3rd man back. He's coming around the wicket. Normally you would think with him coming around the wicket, it would open up the offside because of the angle of the ball going across MS Dhoni. Long off is now coming back, 3rd man is coming up. So this, I think, is a little bit of a better field. I was confused on ball 1. Well, that's not bowling to the field. Helped on its way. And Dhoni, he is an excitement machine when he's going. Well, he's a young man, Avesh Khan. So, just a little bit confused. And when you're bowling to the great Mahendra Singh Dhoni, you're thinking, hello, why am I doing this? If you're going to bowl that on the pads, you're going to go for runs. The whole idea is to try and, like KP said, to try and angle the ball across. Because MSD generally plays it to the onside and straight, of course, to long off. And in that arc from long off to square leg. And that's a bad ball. So if you have a look at the field, he's bowling with that angle across MS Dhoni. Fine leg could come up. You could put extra cover on the boundary. That's going out to Hetmeyer. 1 bounce. He's beating the action out there, Hetmeyer. He's in the firing line, isn't he? He's caught one, he's put one down. He's been boundary riding. That seems to be his specialist position, and that's what they do as well. They recognise where certain fielders' personnel should be in certain positions. Hetmeyer gets deep mid-wicket often. So Faf, 40 from 32. Strike rate not good enough at 125. Just hasn't been able to get going because of the strength of the bowling, really. Last ball, single.
3 overs remaining. 1-1-1 for Falk. मेरी टीम खेल रही है और आपकी माई 11 सर्किल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्किल ऐप नाउ। माथुर के पैसे आ गए। अरे वही खाता आउट करिए, खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। इंसान से मंगाओ चाहे विज्ञान से, प्यास तो दोनों से बुझेगी ना। तो मैच टाइम पे प्यास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। Faf du Plessis sits on top. He's got the orange cap. Well, I said earlier, if you've got the orange cap and your side's not winning, it won't feel as good. Obviously, personally, that's a great result for him. But CSK, they want to get on a winning way. Gone with UKP. I think Delhi are going to be a very hard franchise to beat in this Dream 11 IPL 2020. Rabada takes wickets for fun at this stage. Always taking them at the death. Hasn't got a third man. There is a fine leg. Everyone back on the onside deep. That's gone sky high. It'll take some catching. And, oh, it's gone down. I thought he had it. Was that Hetmeyer again? Talk about the firing line. It was a toughie. It was not an easy catch. But when it's not your day, nothing goes your way. The ball follows you. There again, you can see just a little bit concerned. Fingers pointing skywards. Then, real tough catch. That'll be out though. Big outside edge. Faf du Plessis is on the deck and now has to walk off. So Rabada, as we say, he is just unbelievable at this stage. Absolutely unbelievable. Up there with one of the best, if not the best. We've seen the super overs that he bowls. And the reason why he's up there with the best is because he's got a brain and he uses it and he understands what the batsman is doing. And he knows exactly where to execute. And he's got his captain, Faf du Plessis. He goes for 1-1-3 for 5. My OTP has come. 123651. Credit card bill is done. What is this? Let's do a simple voiceover like download cred. Download cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. Here's your chance to be part of a family like no other. Because we're celebrating 3 years of living the Jeep life. With festive benefits of up to 80,000 rupees for you. Join the Jeep life today. Jadeja now, 63 from 16. So hard for him to come out now. 23.63 off an over, round the wicket Rabada, digs it in. It's just so hard to get away, and he bowls that length, he bowls that pace, he's got variation. No, Faf du Plessis got caught behind after being dropped in the deep, and it was a wide delivery. He gave it a good go. He ends up on the deck, but cross seam from Rabada. That'll run away, no third man. Nicely played. Yeah, that's okay. That's absolutely fine. His pace is up. He's a thinking cricketer. CSK still need 57. The required rate is almost 25. Well, T20 you have a licence anyway with bat in hand. So I think they've got a licence now.
Well, just noodling a one, isn't it? Using a licence. They have to swing, and they have to swing hard, and they have to middle most deliveries. The side batting first, once again, has set the pace. The run chase has been difficult. Do you think captains will change their minds, Sonny? I mean, we're seeing a theme here. Well, actually, when you look at it, the ball comes onto the bat that much better when you're batting first. It tends to sort of slow down just that little bit when you're batting second. Maybe it's a dew factor, whatever it is. With the dew, it should actually skid onto your bat a lot better. But it's not. And maybe that's something that they'll keep in mind, because even 170, anything over 8 runs and over becomes tough if you're chasing. So here's Dhoni, 12 from 7. Pulls it, I think he's found the gap. He certainly has. It'll just be a single. He'll keep the strike. We've got 2 overs remaining. भेज दिया उसको हिसाब भाई खाता आउट करो खाता बुक डाउनलोड करो ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे उधारी वापस लाए फटाफट खाता बुक बिजनेस हुआ इजी पता है केलॉग्स ग्रेनोला में क्या है? इसमें लिफ्ट ना लेने की एनर्जी और एक मल्टीग्रेन और मस्त आमंड्स एंड क्रैनबेरीज हर सुबह केलॉग्स ग्रेनोला ब्रेकफास्ट से बढ़कर For the high-functioning jet setter, taking a moment. New Tiguan All-Space fits all. Real good start in this form of the game. It plays a hell of a role in making sure that you go deep into the 20 overs and you get that big score. We saw it with Prithvi Shaw this evening. Started but went on. KL roll, we saw it, went on. You've got to get those big scores early. You cannot win any games with a top order that doesn't contribute. No, you've got to use that power play, KP. You've got to break the back. There needs to be a cameo up the top, doesn't there? Just to break the back of the run chase so you can control it for that middle phase and then finish strongly. Too much at the end, and you see that run rate get out of control. Again, hit very hard, but straight to the man. Clearly, I think the tactics are to try and bowl the low full tosses or the Yorkers. Not bowl length ball to Mahendra Singh Dhoni. Bowl it outside the off stump, so the ball doesn't come in the arc of the swing of his bat. See, fast Yorker, almost near the white ball length. Just thinking about the Capital squad, you've got Alex Carey sitting in the dugout. What a player he is. He is a serious talent. You've got Ashwin to come back. It's a really solid squad. It's like they're covering all their bases. They've got players like Hetmeyer to find some form. Also got in Stoinis somebody who can come in and roll his arm over for a couple of overs. If somebody's getting banged about, then he can come in and bowl a couple of overs. Extra option for the captain. Always good to have these all-rounders in the team. And tomorrow, we look forward to match 8 already. KKR taking on Sunrisers Hyderabad. So the two skippers want to be setting the scene for their team. That will be Abu Dhabi. We look forward to that already. Here he is, Dhoni on strike again. Really nicely bowled. Nortje, he's been outstanding. He's got 2 wickets. This is his final over. And that was a slow ball. So he's got a genuine understanding of what Mark Nicholas was saying, what he's doing. And he's seen a lot of him play in South Africa. So he'll roll across this one generally. Oh, he goes more like a leg cutter. So I've seen him bowl like the off cutter, and then he goes down the left side of the ball, more like a leg cutter. Takes some skill. With
no fine leg or third man. He's probably going to bowl a few slower balls, I would say. Another one. Yeah, and as good as the Delhi Capitals have been tonight, CSK, they need to be very careful, because in T20 cricket you can win a lot and you can also get on that slippery slope of losing a lot. CSK need to try and find something. Have to find something with their top order. Got to get a batter going in there, scoring quickly and batting big. The opening partnership has to start working. There he is, Murali Vijay, Shane Watson. Got to find something at the top of the order. Will be wide. Well, Ricky Ponting, he was quite disappointed last year. They finished third, Delhi, last year. So they ended up featuring at the top of the table, but he was frustrated. There were games they lost they shouldn't have lost. But he's pretty happy. That's your little smirk when you know Ricky's happy. The last time Delhi got off to a winning start 2 in a row was back in 2010. There he goes. And he's not chewing his nails. Oh, where's the gum gone? Oh, it's a good bouncer. But it's been given a wide. Thought he might have got away with that one. And one of those coaches without a black book, not jotting down all the notes. In his head. Doesn't need a book. Well, I sit next to him in the commentary during the Australian summer, and he's just got that feel for the game. It's uncanny that he can see what's happening in the next delivery or the next over. Magical cricket brain, obviously captain Australia to many, many victories. Good bat as well. Not a bad play. Do you remember the year in Australia we got 3 double centuries in a row? We just could not get him out. Prolific. He was a baby when I first toured with him. We went to the West Indies in 95. What was he, 18? 19? No, 18. He was a baby. It's all right. We changed his nappies. We got him through. How good's Nortje been? And close out his 4th over now. He's been absolutely fantastic. 2 for 21 for Nortje. It's 1 to 7 for 5. I like her. Swipe right. I've never had a threesome before. This was the voice of the social bacteria. She loves slipping in the bed with you. Time you switch to SleepX. Its neem fresh technology kicks bacteria and germs off your bed. SleepX. Bacteria, #not in my bed. Here's Rabada to finish off, and he'll finish off in style, you'd imagine. As he does, he wait until the last phase to get that first wicket. He averages 2 wickets a game. Strong. Bowls so many overs in Test cricket, one-day cricket, and he's still a youngster. And he's turning it on in T20. What a buy he is for Delhi. Any franchise would want him. Straight up in the air. And it will fall safe. Well, I was seeing who the fielder was when the ball went up in the air. Was it Hetmaya? It wasn't. It was Shikhar Dhawan. It was Shikhar. Well, he's down in front of us. He's at fine leg now at Iris. He's been moved around. Could be a top edge to him. So awkward, isn't he? 119, got the slow ball.
Yeah, I said at the outset this was a big game for, well, not only both sides, but certainly CSK, who have looked rusty. I think they're fighting hard to find a combination to get the winning way started. And I think each game, when you're chopping and changing that batting line-up, and Dhoni's batted up slightly high today, probably could have come in earlier. It's hard to settle. And he's gone. Edge, and just gets to the keeper. So that man Rabada gets another one. And a big one. Mahendra Singh Dhoni. This is the last over. Goes for the big pull shot. Slower delivery, fine catch, diving in front by Rishabh Pant. So Dhoni, the Chennai Super Kings captain, gone for 15 of 12 deliveries. Shreyas Iyer, the Delhi Capitals captain, pretty happy with what his team has done today. It's 130 for 6. अरे हिसाब सिंपल हो गया। यस, खाता बुक QR पेमेंट, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Dream 11, make your team now. 19 साल हो गए, जिलेट मार्क 3 आज भी मेरे चेहरे पर आसानी से ग्लाइड कर जाता है। 7000 क्लोज शेव, और एक क्लोज शेव मुझसे बेहतर कौन जाने। The game is gone. And behind it. So Dhoni gets the top edge. He got the short one. It was just another one of those well-used short deliveries. We're seeing a bit of a trend here. A bit of a slower short one, but pointed out earlier that most of the wickets at this ground have fallen to well-used short deliveries. Length of deliveries as well, but majority of the wickets have been short of a length. What do you think Delhi will be most pleased about today, KP? It's been a team effort, that's what I've noticed. Everyone's contributed. They have. I think they're batting. I think they set themselves up with their batting. They could have lost with their batting as well. Stoinis was brilliant in game one. Prithvi Shaw again today. Shikhar Dhawan, Shreyas, they were just all very, very calm and calculated in their approach. It wasn't the case in game one for Delhi Capitals. Yes, they got away with it, and yes, they got over the line. Also their spinners, Aksha and Mishra, outstanding. This guy, so good. So good! 3 for Rabada. Incredible, isn't he? So hard for the batting at the end. No win situation. The run chase just never ever took hold. They never looked like they were on track. It was marginal at the end of the power play, but they'd lost 2 wickets when Delhi hadn't at the same stage. Prithvi Shaw was the one that accelerated for Delhi. CSK had no one who was able to do that, and wickets just kept tumbling. And that run rate, once you get around 11, 12 overs, if you're not meeting it, it goes up rapidly. It certainly does. And this is a big win for Delhi Capitals. 44 runs is a pretty healthy margin to win by. And they'll be very, very pleased with their all-round performance. The only concern would be a couple of catches that went away, but batting, bowling, absolutely top class from DC. Yeah, and Delhi go to the top of the tree. कार इंश्योरेंस के टेढ़े गेम्स में आज खेलेंगे कमीशन का अटैक। तेरी अफोर्डेबल इंश्योरेंस की ओर लपक पड़े खिलाड़ी, आधे नंगू चंगू मंगू, और ये चली कमीशन की गोली और बंद कर दी सबकी बोली। ओहो, इन्होंने तो एको चूज किया। स्मार्ट बॉय यूज किया जीरो कमीशन का जेट पावर, और अब बत्तीसी का प्रदर्शन करते हुए सीधे पहुंचे इंश्योरेंस के टावर।
कार इंश्योरेंस के टेढ़े गेम में मत फंसिए, डायरेक्ट एको पे आइए, पैसे बचाइए। कार इंश्योरेंस डायरेक्ट एको। Calculated characters, but they need to find maybe Bravo comes back. He's got a sore groin.